हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल बैक टू माय चैनल करियर फाइल। तो आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल पर। तो दूसरे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के अलावा अब आपको इस चैनल पर क्रैश कोर्सेज भी मिलेंगे। तो अगर आप यूजीसी नेट, जेआरएफ या सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीटेट की या फिर किसी पीएससी एग्जाम की रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये कोर्सेज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो इन क्रैश कोर्सेज की खासियत ये रहेगी कि आपको बहुत ही ब्रीफली और कंसाइज मैनर में सारे रेलेवेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे इन सभी एग्जाम्स के। एंड स्पेशली हमारा फोकस उन टॉपिक्स पर रहेगा जो इन सभी एग्जाम्स में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। So before actually starting, let me give you all a very brief introduction about myself. So my name is Samiksha Madan and I'm working as a research scholar. And also I'm a qualified UGC NET JRF. तो क्योंकि मैं academics में already हूँ and मुझे teaching career ही pursue करना है for the rest of my life because I love it. I love academics. I love teaching. तो मुझे इसलिए लगा कि if I could be of help to anyone else, then why not? So without wasting any further time, let's get started. So today I'll be talking about research methodology. So research methodology is very crucial subject. तो इससे रिलेटेड आपको यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 में, सेट एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर के जितने पीएससीज के एग्जाम होते हैं या फिर जितने एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं पीएचडी के, इन सभी एग्जाम्स में रिसर्च मेथोडोलॉजी एक बहुत ही मेजर पोर्शन कवर करता है। तो आज हम बात करेंगे इन 3 टॉपिक्स के ऊपर। व्हाट इज अ रिसर्च, द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च एंड लास्टली द प्रोसेस or the steps involved in research. So let me begin with a very brief introduction of what is research. So research is an art of scientific investigation. So research itself means to search again. अगर आप scientifically किसी चीज को search कर रहे हैं, किसी चीज की inquiry कर रहे हैं, investigation कर रहे हैं एक systematic manner में, तो scientific here means systematic. कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड, कुछ गाइडलाइंस पे बेस्ड। बेसिकली रिसर्च में आप किसी आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यू अप्लाई साइंटिफिक प्रोसीजर्स। सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सो इट्स द क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज और इट्स द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ क्रिएटिव वे सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथोडोलॉजीज और अंडरस्टैंडिंग्स। इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कुछ न्यू क्रिएट होता है। या तो रिसर्च की हेल्प से हम एंटायरली कोई नई नॉलेज गैदर करेंगे या हम किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज कर सकते हैं इस तरीके से कि हमारे नए कॉन्सेप्ट्स और नई अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो जाएं। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट कैन बोथ बी एन इन्वेंशन और एन इनोवेशन। बात करते हैं रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो रिसर्च का इंसेप्शन ही प्रॉब्लम से होता है, फिर चाहे वो किसी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो या सोसाइटी इन जनरल से रिलेटेड हो। तो ये प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है एंड इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें मिलता है रिसर्च से। नेक्स्ट, रिसर्च एम्फसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ जनरलाइजेशंस, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज। इस पॉइंट को मैं बाद में और अच्छे से डिस्कस करूंगी जब मैं इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी बताऊंगी आपको। Next, research gathers and synthesizes information in a written report. So research is like a written report, जहाँ आप सारी information, जो data and information आप collect करते हैं, gather करते हैं and synthesize करते हैं, आप उस report में mention करते हैं। Next, it involves logical reasoning. So research, as I already told you, is systematic and scientific, and anything that is scientific is logical. Therefore, research also involves logical reasoning. Next is, the research should be valid, verifiable and replicable. So, validity in the research basically indicates कि कितनी sound है आपकी research in terms of the design and the methods you have used. तो एक research valid तब मानी जाएगी जब आपके जो findings हैं उनको generalize किया जा सके एंड ऑल्सो आपके जो रिसर्च के मेथड्स हैं, जो आपने मेथड्स अडॉप्ट किए हैं अपनी रिसर्च को कंडक्ट करते टाइम, तो वो मेथड्स कितने अच्छे से कंसिस्टेंटली अचीव कर पा रहे हैं सिमिलर रिजल्ट्स को सिमिलर सर्कमस्टांसेस में। तो ये पता चलता है रिसर्च वैलिडिटी से। सो व्हेन आई से वेरिफिएबल एंड रेप्लिकेबल बेसिकली डिनोट्स दैट हमारी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं या रिसर्च आउटकम्स हैं वो कंसिस्टेंट हैं। तो अगर हमारी स्टडी को रेप्लिकेट भी किया जाता है यानी दोबारा भी यूज किया जाता है, सो द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी द सेम अक्रॉस ऑल द स्टडीज। तो कोई भी रिसर्च रिजल्ट्स वैलिड, वेरिफिएबल एंड रेप्लिकेबल तब होते हैं जब हम उनको रिपीट कर सके
एंड सेम रिजल्ट्स को रिप्रोड्यूस कर सकें। सो रिसर्च एक सिक्लिकल प्रोसेस है because it involves a series of linked activities. So research begins with the identification of a problem. ये मैंने आप सबको क्लियर कर दिया है। अभी हमने प्रोसेस नहीं पढ़ा है रिसर्च का, बट लेट मी जस्ट ब्रीफली डिफाइन कि रिसर्च स्टार्ट होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से, फॉलोड बाय रिसर्च क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड देन एक रिसर्चर प्रोसीड करता है टू फाइंडिंग आउट द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। दैट इज वो डेटा कलेक्ट करता है एंड एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है उस डेटा। सो इस प्रोसेस को एक इटरेटिव या सिक्लिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च है हमारी ये कुछ नए आइडियाज में कन्वर्ट हो रही है, कुछ न्यू नॉलेज गेन करवा रही है। जो उसकी फाइंडिंग्स है रिसर्च की, इट इज अगेन लीडिंग टू स्कोप फॉर फर्दर रिसर्च। सो इसीलिए रिसर्च को एक सिक्लिकल या एक रेकरिंग प्रोसेस बोला जाता है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। सो ऑन द बेसिस ऑफ यूज और पर्पस रिसर्च तीन टाइप की हो सकती है, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च और एक्शन रिसर्च। सो बेसिक रिसर्च ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल और प्योर रिसर्च, ये किया जाता है विद एन इंटेंशन टू अपग्रेड सम नॉलेज। सो मेनली जितनी भी एकेडमिक रिसर्चेज होती हैं वो सारी बेसिक या फंडामेंटल इन नेचर होती हैं, एंड दीज रिसर्चेज लैक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बिकॉज आप किसी बिजनेस में या किसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इमीडिएटली इस रिसर्च की यूज नहीं करते। तो आप ऐसे रिसर्च को यूज करते हैं टू एक्सपैंड द एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज। जो भी आपके फील्ड में एग्जिस्टिंग रिसर्च हो रखी है, एग्जिस्टिंग थ्योरीज है, उसमें आप अपनी रिसर्च के थ्रू कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं बाय इंक्रीजिंग और एनहांसिंग द नॉलेज। सो इसका आउटकम क्या है? इट लीड्स टू इंटेलेक्चुअल प्लेजर ऑफ लर्निंग। सो एज मेंशन्ड अर्लियर कि इट एक्सपैंड्स द एग्जिस्टिंग पूल ऑफ नॉलेज। तो आप जब कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एकेडमिक्स में, so it leads to the intellectual pleasure of learning for others. So your research can be a source of literature for further research. So that is why it leads to intellectual pleasure of learning. So next is broad base of applicability. So as earlier discussed कि research को generalize किया जा सकता है to a wider section of people. So example of basic research can be any social science research or any other academic research. So like I said, any academic research is a basic research because उसकी main intention होती है to add to the existing knowledge of literature. Next, I'll move on to applied research. So applied research is quite different from basic research. So इसका intention होता है to solve some practical problems, that is to solve some real world problem. So that problem can concern any business, industry or society in general. तो अगर ऐसी कोई research आप करते हैं which is actually addressing some practical issue faced by the business or the industry, तो ऐसी research को हम applied research बोलेंगे because it can be applied in the real sense. Okay, so it leads to solution of some pressing practical problems and does not develop any theory. So it is done to test theories in the field to achieve better validity. So applied research जो existing pool of information है, जो कि basic research के help से gather हुआ है आज तक किसी भी field में, उन theories का use करती है and उनको apply करती है into its own research. ये किसी भी research को और valid बना देती है because fundamental research generally lacks practical applicability. It lacks universal utility, that is, it has limited utility and the study cannot be generalized. So this is a very important point because a problem or an issue for one business cannot be generalized to other business. हर एक business model, हर एक business issue is different and it depends upon certain factors which is subjective to that business. So as in the case of basic research, applied research में यूटिलिटी उस रिसर्च फाइंडिंग्स की थोड़ी लिमिटेड होती है एंड इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड टू अ वाइडर सेक्शन बिकॉज द प्रॉब्लम विच इज स्टडीड इट इज कंसर्निंग टू अ पर्टिकुलर बिजनेस और अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री एंड इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड एज मच एज बेसिक रिसर्च. सो एग्जाम्पल कैन बी मार्केटिंग रिसर्च एंड मेडिकल रिसर्च. नेक्स्ट वील मूव ऑन टू एक्शन रिसर्च. तो एक्शन रिसर्च भी एक तरीके की अप्लाइड रिसर्च ही होती है एंड आपको इस रिसर्च के नाम से ही पता चल रहा होगा दैट इज इट इज देयर टू सॉल्व सम इमीडिएट इश्यूज, सम इमीडिएट प्रॉब्लम्स एट द टाइम ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन.
सो कुछ इमीडिएट प्रॉब्लम्स को ये एड्रेस करती है। एट द टाइम ऑफ फील्ड इन्वेस्टिगेशन अगर रिसर्चर के सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली उस प्रॉब्लम को वो एक्शन रिसर्च की हेल्प से सॉल्व करता है। सो यू कैन से दैट इट इज द क्विकेस्ट रिसर्च टाइप एंड इट इंटेंड्स टू सॉल्व प्रैक्टिशनर्स ओन प्रॉब्लम। सो जो भी प्रैक्टिशनर है दैट इज द पर्सन हु इज इन्वॉल्व्ड डायरेक्टली इनटू द प्रॉब्लम, ही हिमसेल्फ इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक्शन रिसर्च का कि यहाँ पे रिसर्चर अपनी खुद की या जो ग्रुप है वो अपनी खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। सो दिस इज नॉट इन द केस ऑफ बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। सो यहाँ पे ये एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो मैं बेसिकली आपको की डिफरेंसेस बता रही हूँ इन सारी रिसर्चेस के। जो कॉमन पॉइंट्स है वो मैं नहीं बता रही हूँ, ओनली बिकॉज आई वांट कि आप क्लियरली डिफरेंशिएट कर पाए इन सारी रिसर्चेस को आपस में, एंड एग्जाम के टाइम पे, क्वेश्चन के टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो between any of the researches which I discussed. So the next point is it improves or modifies the current practices. So as you can very well recognize that action research is also one kind of applied research only. So like any other applied research, it lacks generalization and it creates personal utility only. That is इस research study की finding से जो benefit होगा, जो beneficiary है इस research के, that is only the individual or the group जिसने वो प्रॉब्लम एनकाउंटर की थी एंड सॉल्व की है। सो एग्जाम्पल कैन बी टीचर रिसर्च टू इवेल्युएट एंड इम्प्लीमेंट एन एजुकेशनल प्लान। सो कोई भी इनफैक्ट कोई भी अगर क्लासरूम रिसर्च की हम बात करें तो इट इज एक्शन रिसर्च ओनली। सो इस एग्जाम्पल से आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि एक्शन रिसर्च क्या होती है। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू रिसर्च टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. So research can be exploratory, descriptive or causal in nature. And descriptive research, as you can see, is further subdivided into cross-sectional and longitudinal research. So let me discuss one by one each. So first one is exploratory or speculative research. So as the name suggests, exploratory research helps in exploring or identifying the problem. तो exploratory research help करता है to define the actual problem. It helps the researcher to gain more insights on the subject to be studied. And also most importantly, it suggests the hypothesis. So exploratory research is different from descriptive and causal research because it suggests hypothesis and not test the hypothesis. तो ये एक important again key difference है between these three researches and the two I am going to discuss later after this. So exploratory research help करता है in defining the problem and also in suggesting or developing the hypothesis. तो जिनको नहीं पता कि hypothesis क्या होता है उनको मैं बहुत briefly बता दूं क्योंकि आगे मैं hypothesis को at length describe करूंगी। तो hypothesis एक probable assumption है जिसको हम प्रपोज करते हैं एज अ स्टेटमेंट, हम उसको प्रपोज करते हैं अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रिसर्च स्टडी। तो हम पहले ही प्रोबेबल अजम्पशन अपनी स्टडी में मेंशन कर देते हैं कि हमारी स्टडी प्रोबेबली ये फाइंड आउट करने वाली है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द प्रॉब्लम इज अनफेमिलियर अबाउट विच द रिसर्चर हैज लिटिल और नो नॉलेज। सो प्रॉब्लम अनफेमिलियर है एंड द रिसर्चर इज येट टू गेन नॉलेजेबल इनसाइट्स अबाउट दैट प्रॉब्लम। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में बेसिकली लिटरेचर का रिव्यू किया जाता है, प्रॉब्लम की स्टडी की जाती है, उस फील्ड की स्टडी की जाती है सो दैट एक क्लियरर पिक्चर मिल जाए रिसर्चर को टू डिफाइन द प्रॉब्लम। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इजंट डिजाइंड टू कम अप विद फाइनल आंसर्स और डिसीजंस। जैसे कि बाकी रिसर्चेस कुछ रिसर्च क्वेश्चंस को सॉल्व करती हैं एंड उनकी फाइंडिंग्स में कुछ सॉल्यूशंस निकल के आते हैं उस रिसर्च से रिलेटेड। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कुछ नया कंट्रीब्यूशन नहीं करता, इट डजंट कम अप विद फाइनल आंसर्स और डिसीजंस बिकॉज एज आई टोल्ड यू ये एग्जिस्टिंग लिटरेचर को और अच्छे से स्टडी करता है, रिव्यू करता है, देयर बाय इट्स अ काइंड ऑफ यू कैन से सेकेंडरी रिसर्च। अभी हम लेटर लेक्चर्स में प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसर्च क्या होती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो इन ब्रीफ अभी आप इतना जान लीजिए कि सेकेंडरी रिसर्च इट इज कंसर्न्ड विद रिव्यूइंग द अवेलेबल data or the available literature. So the main objective of exploratory research is development of hypothesis and not testing. तो जब hypothesis test ही नहीं करता तो acceptance और rejection की तो बात आती ही नहीं है. So one can't accept or reject a hypothesis with exploratory research.
So this research mainly answers these two questions, what and why of any problem. And it is generally qualitative in nature because it basically concerns the non-numerical data. Next, we move on to descriptive research or ex post facto research. So descriptive research, as the name indicates, is descriptive or detailed in nature. एंड ये किसी भी इंडिविजुअल ग्रुप या फिनोमेना की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन या डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है. And then comes the next point, which is very, very important. So the researcher has no control over the variables. He can only report what has happened or what is happening. तो ये पॉइंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि रिसर्चर का कुछ वेरिएबल्स पे कंट्रोल होता है. And such research study answers the question of what has happened or what is happening. So इस research में how, when, why इन questions का answer नहीं मिलता. So this research type mainly answers the question what. And the main purpose is description of state of affairs as it exists at present. It cannot describe what caused the situation. ये जैसे सिचुएशन है उसको वैसे ही एग्जैक्टली डिस्क्राइब करने में हेल्प करता है. व्हाट कॉज द सिचुएशन इज आंसर्ड बाय द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसर्च, दैट इज कॉसल रिसर्च. एंड दस हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कैन एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कॉसल रिसर्च. सो मोस्ट मार्केटिंग रिसर्चेस आर डिस्क्रिप्टिव इन नेचर ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट की मार्केट पोटेंशियल को चेक करना है किसी मार्केटिंग रिसर्चर को, तो जो भी इस मार्केट पोटेंशियल से रिलेटेड डेटा होगा, रिक्वायर्ड डेटा होगा, वो उसको गैदर करेगा एंड एनालाइज करेगा. बट here he is not going to find out that what will cause an increase into this market potential. So this is descriptive research. Next comes causal research. So causal research, also known as explanatory research, this type of research tests the hypothesis to establish cause and effect relationship. So this point is very, very important, that causal research helps to establish cause and effect relationship between the variables. तो अभी जैसे हमने previously descriptive research के बारे में बात की, तो descriptive research में cause and effect relationship नहीं study किया जाता था. So here two types of variables are studied. One is dependent variables and the other one is independent variables. So कोई भी वेरिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ऑब्जर्व किया जाता है as it is assumed to be causing the relative changes in the dependent variable. So supposingly x and y are two variables and x is a dependent variable whereas y is an independent variable. So since x is a dependent variable, so this will change if we change y, that is the independent variable. So likewise causal research में manipulate किया जाता है one or more independent variables. Here it was y. तो इस independent variable y को researcher continuously manipulate करेगा and as a result जो भी changes वो x variable में ला रहा है उसकी study करेगा. So researcher can manipulate one or more independent variables or the mediating variables to examine its effect on one or more outcome or dependent variable. So independent variable को causal variable भी बोला जाता है because it is causing a change in the dependent or the outcome variable. So one major thing which you need to remember in causal research is that it uses experiments. So these experiments can be either inside the lab where there is a greater possibility of controlling the variable, or also even in the field to work towards establishing the causal relationship. And experiments की help से ही the researcher controls the variable. So like this, use of experiments is a must in causal research because उसके बिना हम cause and effect relationship नहीं identify कर सकते. So here's one example. So supposingly we are studying the effect or the impact which the work environment is creating on the job satisfaction of the employees. So here in this example, work environment हमारा independent variable हो जाएगा, and since job satisfaction is dependent on the work environment of the organization, that is why job satisfaction will become an dependent variable. So I hope I am clear with this example.
So now I'll be defining the other two types of descriptive research, that is cross-sectional and longitudinal. Since अब आपको क्लियर हो गया है कि एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉसल रिसर्च क्या होती है, तो मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च को नॉन कंक्लूसिव रिसर्च भी बोलते हैं, एंड वेयरएज डिस्क्रिप्टिव एंड कॉसल रिसर्च को कंक्लूसिव रिसर्च भी कहा जाता है। बिकॉज इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं करते, यू डू नॉट गेट डेफिनेट फाइंडिंग्स। On the other hand, descriptive and causal research को आप conclude कर सकते हो with some valuable research findings. That is why these two are known as conclusive research. So now let's come to cross-sectional and longitudinal research. So cross-sectional research is also known as one-time research. So यहाँ पर researcher different samples collect करता है at one point in time, and the data is taken collectively from a variety of people, subjects or phenomena, and because the data is collected at a single point in time and since it's a one time research, तो आपकी जो investments हैं वो कम होती हैं and it's comparatively easy than longitudinal research, so it's cheaper and easier. So अभी मैं आपको example बताऊंगी जिससे आपको एकदम clear हो जाएगा cross sectional research. So the example is, in order to study an age-related data, participants of different age groups were taken at same point in time. So supposingly मुझे कुछ demographic measurements के लिए age-related data चाहिए था participants का, तो मैंने क्या किया कि मैंने different age groups को approach किया and उन सब से data collect कर लिया, but at a single point in time, एक ही बार में किया। तो मैंने अलग अलग सेक्शन ऑफ लोगों को, अलग अलग एज ग्रुप्स को एक ही बार में अप्रोच करके डेटा अपनी रिसर्च स्टडी के लिए कलेक्ट किया एंड एनालाइज किया। सो दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल रिसर्च। नाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रॉस सेक्शनल, बिकॉज वी आर टेकिंग द डेटा फ्रॉम वेरियस सेक्शंस एट अ सिंगल पॉइंट इन टाइम। नाउ कम्स लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च। सो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में क्या होता है कि आप डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम पर डेटा कलेक्ट करते हैं, but here the twist comes that the data is from the same sample or the same group of individuals. तो तभी तो आपको several phases में data collect करना पड़ता है, because the sample or the group you are studying is the same and आपको अलग अलग time periods पे उनसे data collect करना होता है so as to analyze the development process. तो बेसिकली आपके जो रिसर्च पार्टिसिपेंट्स हैं या अगर आप किसी फिनोमिनन की स्टडी कर रहे हैं तो आप उन वेरिएबल्स को मेजर करते हैं ओवर सेवरल इंटरवल्स इन ऑर्डर टू सी द चेंज। तो उसी सेम सैंपल में या उसी सेम ग्रुप में क्या क्या चेंजेस आप नोटिस कर रहे हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम। सो उस चेंज को मेजर करने के लिए लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की हेल्प ली जाती है। सो इट कैन बी एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू कंडक्ट। Obviously, it can be well understood. कोई भी layman भी ये समझ सकता है कि as to why this is expensive and difficult to conduct. And one example can be, in order to study an age-related data, same participants were studied over time, which helped in their developmental analysis. So, आपने देखा कि यहाँ पे same participants को study किया जा रहा है over separate time intervals. This is how cross-sectional and longitudinal research differ from each other. So there are other researches as well that you all must know. Talking about the first one, that is evaluation research. So evaluation research is basically a type of applied research. And more than a type of research, it is a style of doing research. तो evaluation research में basically होता क्या है कि एक systematic assessment type का conduct किया जाता है जिसका aim होता है to gain insights about a project or a program in order to evaluate how well a program or a project or an operation has been conducted. And with the help of evaluation research, the organization can get to know that what is working for it and what is not. So this can help the organization to identify its weak areas and likewise it can improve. Research on family planning scheme or research on any government or non-government projects. These are the examples of evaluation research. So in short, अगर वो एक proposed या एक already running project है या फिर वो project already past में run हो चुका है लेकिन you just want to gauge your past performance. So evaluation research can thereby help you in assessing the effects and building capacity. So अब मैं बात करूँगी analytical research की. So analytical research
is a type of in-depth study and evaluation. तो यहाँ पर मेनली आपकी critical thinking skills मैटर करती हैं analytical research में. So any research that is demanding critical thinking skills and evaluation of the facts and information, then that research is supposed to be analytical in nature. तो analytical research में facts and information already available होते हैं. What you have to do is on your part as a researcher is to analyze and make critical evaluation. तो just like evaluation research में analytical research को भी एक approach बोलूँगी research का rather than a type of research. Because अभी तक मैंने आपको जितनी भी research types बताई हैं they were the actual broad types of researches. अब जो भी मैं अभी miscellaneous and other researches में मैं discuss कर रही हूँ they mainly define the approach which you are following. But इनका question जो है interestingly types of research में आता है. So that is why I am covering these researches in types of research. So the next point in analytical research is that it discovers and measures causal relationship between the variables. तो analytical research बहुत similar होता है causal research के. तो causal research आपको I hope कोई confusion नहीं होगी अब. So just like causal research ये भी variables के बीच के relationship को identify करता है and measure करता है. Analytical research typically answers the question why. So now I'll be talking about the last research, that is diagnostic research. So diagnostic research aims to identify the causes of a problem and the possible solutions for it. So diagnostic word in itself means a symptom or a characteristic. So true to its name ये characteristics and features बताता है research problem की. And diagnostic research is very similar to descriptive research. However, the primary difference between the two is that diagnostic research is more pragmatic, more application oriented than the descriptive study. And lastly, it is directed towards what is happening, why it is happening and what can be done. तो जैसे हम मेडिकल प्रैक्टिस की बात करें तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका डायग्नोसिस करता है वो एंड बिफोर ट्रीटिंग यू वो आइडेंटिफाई करते हैं दैट व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज हैपनिंग विद यू एंड व्हाई इज इट हैपनिंग एंड देन ही आइडेंटिफाइज दैट व्हाट कैन बी डन नाउ. सो सिमिलरली डायग्नोस्टिक रिसर्च का भी वही एम होता है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग एंड देन व्हाट कैन बी डन और द रेमेडियल एक्शन विच कैन बी टेकन. तो यहाँ पे रिसर्चर ये आइडेंटिफाई करता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी से, दैट इज हाउ ऑफन अ वेरिएबल इज अकरिंग एंड उसका रिलेशनशिप क्या है बाकी वेरिएबल्स के साथ. सो डायग्नोस्टिक रिसर्च बेसिकली मेडिकल एंड क्लिनिकल रिसर्चेज में यूज होता है. सो विद दिस आई एंड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्चेज. आज इस वीडियो में मुझे आपसे प्रोसेस भी डिस्कस करना था लेकिन वीडियो अभी काफी स्ट्रेच हो चुका है, काफी लंबा हो गया है, तो अब मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगी. And also I'll be discussing other very important topic that is the research methods. So मिलती हूँ अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें. नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और ये भी बताएं कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आगे. एंड वील ट्राई आवर बेस्ट टू ब्रिंग दैट फॉरवर्ड.